Yeah, we are live, I guess. Okay. Yeah, so hello everyone. Welcome to the CUET exam factor. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आपको मिलती है सीयूईटी की कंप्लीट गाइडेंस। सीयूईटी के प्रिपरेशन के वक्त हम सबको यही चाहते हैं कि हमें अच्छे से कॉलेज मिले एंड वी स्कोर गुड। सो for this, I would recommend you to join this platform for complete and precise preparation. But before we move further, let me introduce myself to you. I am Yashshvika Tiwari and I am currently pursuing political science honors from Lady Shri Ram College. And I appeared in CVT UG 2022 and I achieved 100 percentile in the following subjects, which you can see on your screen as well: history, political science, economics, and English. So now coming to the question of the moment, why I'm here. So here at Exam Factor, I will be solving some previous year questions and some other practice questions with you so that you prepare well for the CUET 2024 attempt. And along with it, I will also be sharing some examination tips and tricks with you, which are personalized, of course, and methods which you should take care of during the examination and during the preparation of the examination. So to practice the exam factor, have a series of mock tests as well, which are completely aligned with the CVT syllabus and the difficulty level. And you can see the subjects on the screen: accountancy, business studies, economics, mathematics, and so on. So there are so many subjects, and it almost covers your syllabus. एंड सो एग्जामिनेशन एग्जाम फैक्टर एक का प्लेटफॉर्म जो एक सीयूईटी के प्लेटफॉर्म के जैसे ही डिजाइन किया गया है, तो इट गिव्स यू रियल एग्जाम टाइम फील सो दैट यू डोंट फील ऐसे कि कुछ अलग तरीके के एग्जामिनेशन पैटर्न है या एग्जामिनेशन का जो इन्वायरमेंट है वो कुछ अलग है, तो उसको आपके साथ आपको फैमिलराइज करने के लिए एग्जाम फैक्टर का जो प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वो एकदम सीयूईटी फील वाला है. So I would recommend you to you should visit the official website of the Exam Factor after the session first and have a look at it. And दो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं फिर किसी भी प्रिपरेशन में एंड स्पेशली सीयूईटी के टाइम पे, जिसमें पहला है रिवीजन और दूसरा है प्रैक्टिस. तो रिवाइज करते टाइम मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरे सिलेबस से गो थ्रू करें अगेन एंड अगेन. सो फॉर दैट दे हैव सम क्रैश कोर्सेज एज वेल व्हिच यू कैन यूज फॉर a one shot lectures of every chapter. Now further, not delaying it further, so let us solve some of the problems which we have some questions. So this is the first question. So Medha Patkar is related to which of the following movement? Option A, anti-Arab movement; B, Narmada Bachao Andolan; C, movement for right to information; and D, movement for self-respect of the Dravidians. So I would want every one of you to answer in the chat box. Just try and interact so that I can understand what is your level of preparation as well as we can solve it together. And the main thing is that once even if you give wrong answers, the best part about it is that कि अगर वो सेम क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसको फिर दोबारा से गलत नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी उसको एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड गिव द आंसर. ओके, सो someone saying A. Any other answers? Delight and dance, Narmada Bachao Andolan. Okay, I should not take so much time. I think it was an easy question. So, Medha Patkar, it's related to Narmada Bachao Andolan.
These kind of questions require you to learn the factual things. So this is a fact. इसमें कोई conceptual clarity वाली कोई जरूरत नहीं थी. ये just एक normal fact था जिसके लिए you should be well aware of the chapter as well as what was there, like the basic main points of the all the movements. So अगर मैं बात करूँ anti-error movement की, तो you should know what was it to solve this question. I'm just giving you a trick to solve such kind of questions so that अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो भी you can associate something or the other with the question and solve it. So anti-error movement अगर पता होता है इसके बारे में तो what would happen? Anti-error movement में क्या था कि it was against the liquor. तो कुछ जो विमेन थी आंध्र प्रदेश की नेलोर डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने एक मूवमेंट किया था दैट वाज अगेंस्ट द लिकर का जो सेल हो रहा है उसके अगेंस्ट में. तो एक बहुत, अगर मैं कॉमन सेंस भी यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक वुमेन को मैं इससे एसोसिएट नहीं कर सकती. ये पूरा ही मूवमेंट वुमेन सेंट्रिक था. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है. सेकेंड को हम साइड में रखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी करेक्ट है. सी जो ऑप्शन है, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मूवमेंट काफी, मैं कहूंगी बाकी सबसे थोड़ा नया है. और दूसरी चीज ये है कि अगर इस बारे में पता हो, थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो, तो हम इस पे भी गेस कर सकते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट था, ये इसके बाद आया था. और ये बेसिकली एक फार्मर्स का प्रोटेस्ट से निकली हुई चीज थी थोड़ी. और तो अगर मैं डायरेक्टली उसको भी एसोसिएट करने की कोशिश करूं तो कोई मुझे एक सिंगल पर्सन का नेम ऐसे एसोसिएट में नहीं कर पाएगी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बेसिस पे. और लास्ट इज मूवमेंट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द द्रविडियंस. ये तो ईवी रामास्वामी का जो था उनका था. और तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि द्रविडियंस के लिए जो एक अलग से मूवमेंट और एक अलग से पर्सन है वो हमें ऑलरेडी पता है, जो हमें हमें बुक्स में चैप्टर में क्लियरली मेंशन है. तो अगर मैं एलिमिनेशन ट्रिक भी यूज करती हूँ तो उसके बाद इट वुड बी ऑप्शन बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the army action taken at Golden Temple, Amritsar in 1984 was known as Operation Red Star, Blue Star, Black Star, or Operation Star. So, any answers? Okay, Navneet is saying B. Okay, that's again an easy question, I would say. And it's also a factual question क्योंकि बुक में डायरेक्टली मेंशन है ये भी चीज कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ही था. एंड आई थिंक it is one of the most discussed thing. If you follow current affairs वाला तो इसका impact आज तक भी है. तो I think it's a easy question. And so it is Operation Blue Star. There is nothing which I can eliminate from here क्योंकि इसमें elimination का trick use नहीं हो सकता. ये direct question है, factual question है. तो ये तो याद करने वाली चीज होती है. Next question. Okay, match the columns. Mikhail Gorbachev, economic model, shock therapy, perestroika, and glasnost. Boris Yeltsin, military pact, and Warsaw Pact, president of Russia. Okay. Any answers? Okay, so many answers. D, D, C, B, D, C. Conflict between C and D.
Okay. Okay, I'm also reading the questions for the first time, so I'm literally solving them with you. D, fine. Okay, let's try and solve. Um, there are two personalities which are given. First is Mikhail Gorbachev and second is Boris Yeltsin. तो दोनों को अगर मैं लाइक पर्सनालिटी वाइज दो पर्सन के नाम दिए हुए हैं उसके हिसाब से अगर मैं एलिमिनेट करती हूँ दूसरे कॉलम में से तो दोनों में से एक प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ऑफ कोर्स होने वाले हैं ठीक है उसके अलावा वी हैव सेकंड शॉक थेरेपी नाउ शॉक थेरेपी इज नॉट कनेक्टेड टू पेरेस्ट्रॉइका एंड ग्लासनोस्ट क्योंकि वो पॉलिसीज थी एंड शॉक थेरेपी पूरा प्रोसेस था Warsaw Pact or Boris Helfsten, I have already discussed that he is a personality, so he must be the president of Russia, or he should be associated with something else. Now, Warsaw Pact, we all know, was a military pact, uh, which was uh, which was initiated as a counter to NATO. Okay, so मुझे लगता है सबसे इजी अगर हम गेस करना चाहें तो सबसे लास्ट वाला हो सकता है फोर्थ would be matched with third. So we can eliminate option B and we can also eliminate option C क्योंकि दोनों में फोर्थ का ऑप्शन अलग दिया हुआ है तो फोर्थ का थर्ड we have shortlisted. Now moving further, um, next thing is if I take shock therapy for example. So shock therapy के लिए I have two options. According to option A, it can be one. I don't know if it is one or what. Yeah, it's one. Or otherwise, it should be second. Now, shock therapy was not related to perestroika and glasnost, as I have already said, because they were the policies that was not a model or a process. Sorry, that was not a policy, but a model or a process. So, shock therapy was an economic model. It would be first, क्योंकि D भी eliminate हो गया. But okay, these options are incorrect. These options are incorrect. There's some mistake in the options. There's some mistake in the options. First का होगा Mikhail Gorbachev will be matched with perestroika and glasnost because these were the policies which were introduced by him. So first का second होना चाहिए जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शंस थोड़े गलत हैं. And Boris Yeltsin was the president of Russia, and he cannot be associated with any other option as such because he did not introduce any economic model, he did not introduce perestroika and glasnost, and during his time, no military pact was signed as such. Okay, so second would be matched with the economic model, as I have already discussed, and Warsaw Pact was the military pact. So the options are incorrect. The problem is this. So all of you who were answering, I don't know how you arrived at the right answer. Okay, moving forward. Any doubt in this? If someone has any contention or anything? You have got my point, like what I have said. There are mistake in the options itself. Okay, I think there are none. So moving forward. Question 4. The Rio Summit produced conventions dealing with climate change, biodiversity, forestry, and recommended a list of developed practices. No known, okay, it should be known. Uh, Brundtland Report 1987, Antarctic Treaty 1959, Agenda 21, Antarctic Environmental Protocol 1991. Hmm. Answers, please. It's very easy because we are in the question itself, we are talking about climate change, biodiversity, forestry, right? इसमें से डायरेक्टली दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं अगर हम थोड़ा ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट्री
और क्लाइमेट चेंज। ओके, गिव मी आंसर बाद में, थोड़ा पहले मुझे ये बताओ कि कौन से एलिमिनेट हो सकते हैं इसमें से ऑप्शंस। सिर्फ ये तीन वर्ड्स को देख के, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, इन तीनों चीजों को देख के मैं कौन से दो ऑप्शन है जो एलिमिनेट कर सकती हूँ डायरेक्टली। कुछ भी, किसी को अगर नहीं भी पता होगा, कोई भी लेमैन कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेगा इनमें से, जस्ट इन टर्म्स के बेसिस पे। Yeah, there people are giving right answers, but I am asking. I know it's an easy question, but I want for the people like how will you eliminate? Which options can be eliminated on the basis of these three terms? I think the most easy would be the Antarctic and the Antarctic again. So Antarctic Treaty 1959 and Antarctic Environmental Protocol 1991. There is no mention in the description of the question about the Antarctic and its geography or उसके geographical features. वहां पर बायोडाइवर्सिटी है बट फॉरेस्ट्री एसेस नहीं है, क्लाइमेट चेंज है बट अगर मैं इन तीनों चीजों को एक साथ एसोसिएट करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो अंटार्कटिका के रिलेटेड कहीं से भी मैं उसको कनेक्ट कर पाऊंगी। तो आई थिंक बी एंड डी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर लाइक नॉलेज है तो उसके बाद तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच ही सकते हैं। एंड ब्रंटलिन रिपोर्ट, कैन समवन टेल मी ब्रंटलिन रिपोर्ट किससे कनेक्टेड थी? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है और ये लाइक आगे तक भी बहुत काम आती है। सो it is connected to most discussed term nowadays, like international conferences या national governments, everyone is trying कि वैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, मैंने बोल ही दिया है। तो what is that one word with which the Brundtland report is connected? Yeah, correct. It's sustainable. Yeah. So Brundtland report is connected to sustainable development. So it came in the sustainable development for the first time was introduced in this report only. So इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एजेंडा 21। Last question for the day. Which one of the following statement is true about mixed economy? Okay, so इससे पहले हमने जितने भी questions discuss करे, they were more or less very factual और they required knowledge जो कि तुम्हें मतलब थोड़ा याद करने वाला memory based questions थे वो। ये जो question है, ये conceptual question है। इसके लिए you need, अगर ऐसे questions आ रहे हैं कि कौन सा statement correct है या इनमें से क्या चीज गलत है या कोई एक टर्म के बेसिस पे कोई क्वेश्चन अगर फॉर्म हो रहा है तो उस पे यू नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ऑप्शन ए इज इट इज द पॉलिसी ऑफ मिक्सिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फॉर रैपिड प्रोडक्शन। बी इट इज द पॉलिसी फॉर ऑफ laissez-faire. C it is the policy where the public and private sector coexist and are complementary to each other. Sorry. And D is it is the policy of mixing urban and rural economy. What is the correct answer? We all know there are three kinds of economies, very loosely when we say. So, very loose classification of the economies. There are three kinds of economies: capitalist, socialist, and the mixed economy. So, what would be a mixed economy? Okay, it's yeah, correctly given. It's C. So, बहुत ही अगर पता होगा इसके बारे में तो ऑफ कोर्स वी कैन रीच टू द करेक्ट आंसर दैट इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। ए की बात करूं, ऑप्शन ए की, तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फॉर रैपिड प्रोडक्शन, आई थिंक ये हर इकोनॉमी में होता है क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता इसका एक डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकता है। दूसरा है लेजी फेयर इकोनॉमी का, तो लेजी फेयर इकोनॉमी बेसिकली इज
सेकंड टर्म फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रोमिनेंस मिलता है, या फिर एक जो एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड का थ्योरी होता है, तो वो कहते हैं कि मार्केट जो है वो खुद से इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे रख सकता है, तो उसको लेजी फेयर इकोनॉमी बोलते हैं, जहाँ पर स्टेट का कंट्रोल नहीं है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड डी इज इट इज द पॉलिसी ऑफ मिक्सिंग अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी, वेरी वेग ऑप्शन, क्योंकि रूरल और अर्बन इकोनॉमी दोनों साथ में ही मिलके एक इकोनॉमी को फॉर्म करती हैं, राइट? Okay, so this is it. These were the main five questions for today. We'll be discussing more questions from tomorrow because it was just an introductory kind of lecture. So that is why I kept it short. So, but you can all have a look at the podcast as well. There are some of them on the channel itself, which they keep posting at regular intervals. For that, I would suggest you to subscribe to the channel, and for which the link has been provided in the description. Okay, and I'll see you again tomorrow, probably. So that's it for today. Thank you so much.